options. So today we are doing science options, next we are coming up. So the idea of these is that you listen to all of these, take an informed decision that what your child really wants to do. And it's important for you to decide, talk to multiple people and decide that what is the right career option for your child. So that's part of, we are trying to educate you, help you to understand various options, and that's the whole idea of this series. What is the agenda for today? Is we'll start with our success stories के साथ चालू करेंगे. What after standard 10th? Then I will give you what you can anticipate. Engineering and medical के scenario को discuss करेंगे. UT champions के course के बारे में we'll talk about कि हम क्या offer करते हैं in engineering. We offer a complete suite of courses. तो हम क्या offer करते हैं? My colleague Mr. R.K. Singh will come in and help you with this. And then we will open it for open house question answers. Now, isme there is a huge demand for our UT champions engineering medical course. So हमने इसको कैसे किया है? We right now opened it only to the top 50 parents of university. So first we are giving, and there are real scholarships associated with these programs. And these are, mind you, real scholarships. These are not marketing gimmicks. These are real scholarships associated with these. So hence we opened it up to our top 50 parents first. And then eventually down the line, a month later, it will get open to the remaining students. Do we have capacity to absorb everybody? Yes, we are not like old Agarwal days, hamare time pe, ki we have limited capacity. No, we are not having that. But these real scholarships are only going to the top 50 parents. So what is this? Chaliye, let's get started with. So before we begin, it will be a good idea to make your notes. आपको कुछ notes करने हो. There is a lot of information which is coming your way. ये सारा PPT एक हम WhatsApp पे आपको PDF भी भेजेंगे. वो at the end of the day भेजेंगे. लेकिन अगर आपको कुछ अपने notes बनाने हैं, it's a good idea to do that. चलिए. सर आप म्यूट हो गए. हेलो सर, आप म्यूट हो. कर दिया. So question answers will be at the end and we would keep it that way. चलिए, let's get started. So these are our success stories. UT is joined hand with a partner company by name Champions Academy, and Champions is doing wonderfully well in these two IIT and NEET courses. And this year, the student Yash Jonjale has got 100 percentile at physics, then 99.9 in mathematics. And allow me to bring this slide for the benefit of parents over here. 99.9 in chemistry. So Yash has done wonderfully well in his, and there are these other students who've done wonderfully well from Champions in the recently concluded JEE Mains. Now, Champions is an institute, जैसे मैं at Universal, I supposedly जैसे राहुल गांधी young है, वैसे हम भी अपने आप को young बुलाते हैं. I'm the same age as him, 50 years. So this started by a person by name R.K. Singh sir. Again, an inspired teacher who went to IIT Madras, and वो भी classroom के अंदर हैं जैसे मैं हूँ. So both of us share those similar ideologies, and उन्होंने ये Champions Academy चालू करी थी. The idea is Champions was based out of Andheri, and they wanted an outlet in Navi Mumbai. So we became partners, and we extended the cooperation where we become their infrastructure partners of Champions, and we provide their classes here in Navi Mumbai. Champions is right now running their active courses at Airoli, Vashi, Nerul, and Kharghar and Panvel. So this is where they are running their UT Champions. They are running their 11th and 12th IIT and NEET courses. This is the kind of results they've produced in JEE Mains. Coming to Yash, who's been their star performer. He was part of our 2-year classroom program. He's got AR 52, All India rank 52 in JEE Mains.
So this is being the kind of performance we'll be doing. Now coming to, so these are students who've done wonderfully well, but I am in particular, I've highlighted this student who is like not performed the best, but how UT takes care and UT champions takes care of a student. Now this particular boy was 98.18 percentile in JEE Mains. Now 98.18 percentile in JEE Mains is a good score, but the kind of competition we have, you'll see it doesn't give you a good seat anywhere. So we were mentoring him and we said, it's a good idea that why don't you apply to BITS? And we made him apply to BITS. Now this slide is slightly older slide. It says dual degree, but he's actually got a computer science at BITS Goa now. So this is where what we say is we mentor the children in such a way that uske ye bachcha mere sath 9th mein tha, 10th mein tha, 11th mein tha, 12th mein tha. He was also shooting for study abroad, but then he eventually landed at BITS Goa. Very satisfied, very happy kid. So this is something which we would like to talk about. This is my own son. He did wonderfully in SAT 1510, TOEFL 114, SAT subject 800 on 800. He went to Harvard for his summer school. Now he is in second year Purdue University pursuing computer science. So he was somebody who was not wanting to study in India. He was wanting to do study abroad, and he did that. So we offer, if you want to do engineering, we offer those courses. If you want to do study abroad, we offer those courses and many more. We offer a complete set of things. So this was about the success stories. Now let's immediately get into what after standard 10. Focus is on science. कि आज हम फोकस कर रहे हैं साइंस के ऊपर. अगर आप स्टैंडर्ड 10th के बाद साइंस की पढ़ाई करना चाहते हो तो व्हाट आफ्टर स्टैंडर्ड 10th. सो कौन से बर्निंग क्वेश्चंस हैं? 4 बर्निंग क्वेश्चन आफ्टर 10. दीज आर वेरी रिलेवेंट क्वेश्चंस. सो 4 क्वेश्चंस मेरे को लगता है सबसे पहले कि कौन सी स्ट्रीम लोगे आप? साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, क्या लोगे? Which board? What subject combinations? And finally whether it should be an integrated or a non-integrated option. आपके ये जनरली 4 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों. तो ये 4 क्वेश्चंस जो हैं इनको मैं एक एक करके आई विल ट्राई टू आंसर दीस 4 क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन, तो आपको 10th स्टैंडर्ड तक द किड्स हैव स्टडीड, 10th स्टैंडर्ड तक द किड्स हैव स्टडीड, ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड इन वन सिंगल क्लास. मतलब चाहे आपका कोई भी फ्रेंड है, कोई भी है, चाहे डीपीएस में 6 सेक्शन है, 7 सेक्शन है, but all those 6-7 sections are studying the same math, science, social, English. सिर्फ लैंग्वेजेस में फर्क है, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, बस उतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है. Students have studied the same set of subjects. But after standard 10th बच्चों, अच्छा ये largely मैं जो बात कर रहा हूँ, I have realized over a period of time, a lot of this information is natural to us as parents. लेकिन जो 10-15-year-old kids हैं, 10th grade में जो बच्चे हैं, उनको ये चीजें ऐसी मालूम नहीं होती. So a lot of my audience is the kids, where the kids are aware कि वो क्या कर रहे हैं. तो आपको बच्चों जब आप 10th के बाद मूव करोगे तो आपको 4 ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा. एक से हाँ, आपको 3 ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज. आपको बोला जाएगा कि आपको अब इसमें से पिक करना है कि आपको क्या लेना है. Whether you want to pick up science or you want to pick up commerce or you want to pick up arts, humanities. और आपको बोला जाएगा कि अब 10th के बाद आपको डेफिनेटली चूज करना है, या तो साइंस पढ़ो या कॉमर्स पढ़ो या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज. अभी ऐसे आपको बोला जाएगा कंपल्सरी. सो एज किड्स यू हैव टू डिसाइड कि हमको क्या करना है. व्हाट इज दैट यू नीड टू डू. अब आज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस ऑप्शंस. we are today talking about not about commerce and arts and humanities options. वो अगर आप मेरे साथ सुनना चाहते हैं तो मेरे आगे की अक्टूबर सीरीज के मेरे वेबिनार्स में सुनिएगा. But today we are talking about science options. Science में there are then further science में divide होता है. Engineering में जा सकते हो, medical में जा सकते हो, या you can get into yes please come in. या यू कैन परस्यू बोथ. तो ऐसे फाइनली साइंस ऐसे फर्दर बाइफरकेट होता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल या बोथ. नाउ यू कैन कीप दिस. आगे बढ़ते हैं. तो स्ट्रीम अगर आप साइंस लोगे तो आपके पास इंजीनियरिंग, मेडिकल ऑप्शंस.
आई एम नॉट टॉकिंग टुडे अबाउट कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, वो मैं अगली बार बात करूंगा। सो अब बोर्ड, कौन सा बोर्ड लेना चाहिए? अब आप राइट नाउ यू मे बी स्टडीइंग इन सीबीएसई बोर्ड, you may be studying in ICSE board, you may be studying in Maharashtra state board, or you may be in an IB board. अब इनमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 10th के बाद, आपको ये बोर्ड चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। आप सीबीएसई से आईसीएसई में, या आईसीएसई से सीबीएसई में, या स्टेट बोर्ड में, या आईबी बोर्ड में जा सकते। अब ये कैसे ये डिसीजन लेना चाहिए, वी वुड टॉक अबाउट दैट इन दिस स्लाइड। Which board? What is our recommendations? अगर आप स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हो कि आपको आईआईटी जेई में जाना है, नीट में जाना है, सीएसईपीटी में जाना है, कॉमर्स में, तो वी रेकमेंड दैट यू शुड लार्जली बी इन सीबीएसई। और मैंने स्टेट भी लिखा है, मैं समझाऊंगा क्यों लिखा है। सीबीएसई प्राइमरीली बिकॉज ये जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आईआईटी, नीट, इनका सिलेबस सीबीएसई महाराष्ट्र और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से अलाइन होता है। वर्ड टू वर्ड जो सीबीएसई का सिलेबस होता है वही आईआईटी जेईई का सिलेबस, वर्ड टू वर्ड। बट स्टेट बोर्ड क्यों रेकमेंड कर रहे हैं? स्टेट बोर्ड सिर्फ इसके लिए रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि जरूर स्टेट बोर्ड में इंटीग्रेटेड ऑप्शन इज समथिंग व्हिच इज ऑफिशियली अलाउड। सीबीएसई में इंटीग्रेटेड ऑप्शन इज अ वर्कअराउंड। इसके लिए वो मैं अभी 1 मिनट में आई थिंक अभी समझा देता हूं। जैसे आपने डिसाइड करा आईआईटी पढ़ना है और आपको हमारे साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में करना है, तो हमारे साथ अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हमारा खुद का जूनियर कॉलेज है तो वहां पे आपको कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क, आवर ओन जूनियर कॉलेज इन द सेम बिल्डिंग, बच्चे को कहीं और नहीं जाना है, बट दैट इज ओनली अलाउड फॉर स्टेट। बट कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, हमको सीबीएसई सिलेबस ही पढ़ना है, तो देन देयर इज एन इंटीग्रेटेड अरेंजमेंट where we have integrated arrangement with multiple schools, उनके साथ वो अरेंजमेंट है, तो वो एक अरेंजमेंट है, वो एक जुगाड़ है। तो अब आपको वो जुगाड़ पसंद है या नहीं पसंद है, दैट यू हैव टू डिसाइड कि वो आपको करना है या नहीं करना है। I did it for my elder son and I put him in that जुगाड़. He was not willing to do state board, that's why I put him in CBS. But वो आपको डिसाइड करना है। और ये सारे क्वेश्चन अपन आज आंसर करेंगे। नेक्स्ट, अब अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हो, like CLAT, NATA, fashion design, NDA, etc., कोई फर्क नहीं पड़ता है, you can go in any board whichever is more convenient. आपके घर के पास में कौन सा अच्छा स्कूल है, आपको मेरे ख्याल से then the criteria is आपके घर के पास क्या चीज है, then it is like this. अगर आप स्टडी अब्रॉड करना चाह रहे हो then it is IB or any other board. मतलब अगर स्टडी अब्रॉड है so then preferred is IB, but अगर IB का स्कूल आपके घर के पास नहीं है, अच्छा नहीं है, तो यू में, बट आईबी बोर्ड में गए देन इट्स अ नो एंट्री काइंड ऑफ है। आप उसमें गए और फिर सोचो कि वहां से हम आईआईटी भी तैयार कर सकेंगे, नहीं होगा। सो अगर इफ यू आर गोइंग फॉर एन आईबी बोर्ड देन डू नॉट लुक एट इट कि आप आईआईटी या नीट की तैयारी कर सकते। सो इट्स अ स्लॉट ऑफ नो एंट्री बिकॉज़ दैट बोर्ड वुड नॉट अलाउ यू टू प्रिपेयर फॉर द इंडियन एग्जाम्स। सो ऐसे ये डिसीजन लेना है। लेट्स मूव अहेड। सो अपन ने स्ट्रीम की बात करी, साइंस लेना है अगर आपको, बोर्ड की बात करी, व्हाट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपके 11th-12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या रहने वाले हैं, लेट मी टेल यू क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रहने वाले हैं। साइंस में डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा लेते हो, सपोज आप सीबीएसई में होगे तो आपको इंग्लिश प्लस पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 4 सब्जेक्ट। अब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं पढ़ते। और सीबीएसई में हो तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, तो आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। दीज आर योर 5 सब्जेक्ट्स। आप स्टेट बोर्ड में जाओगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज बाइफोकल, तो वहां पे आपको सीएस मिल जाएगा एंड यू विल हैव ओनली 5 सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर बाइफोकल कॉन्सेप्ट नहीं मिला, नॉर्मल मिला, तो आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। स्टेट बोर्ड में क्या है, 100 नंबर 200 300 400, और इसके अगर बाइफोकल मिला तो ये 200 नंबर का मिलता है, तो देन इट बिकम्स अ टोटल ऑफ 600। अगर ये नहीं मिला तो आपको ये 2 सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, ये 100 नंबर और ये 100 नंबर, दैट्स हाउ इट वुड मेक इट 600। सो ये होएगा स्टेट बोर्ड में। और आईएससी में अगेन दे फॉलो द सेम स्टेट बोर्ड थिंग, तो ये 600 में से होगा और 2 सब्जेक्ट्स ले। अब ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग कॉलेज के अलग अलग
जो वो कॉलेज ऑफर करता है। लाइक जैसे यूटी का आप, हमारा यूटी चैंपियंस का आप जूनियर कॉलेज ज्वाइन करोगे, वी डू नॉट हैव बाइफोकल परमिशन, वी हैव नॉर्मल परमिशन। तो आपको हमारे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स, दीज सब्जेक्ट्स आर रिलेटिवली वेरी इजी, आप ये ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेडिसिन लोगे तो आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे? कोर सब्जेक्ट्स आपके पीएम की जगह बी होंगे, तो आप पीसीबी लोगे। फिर इधर आप यू कैन पिक अप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज इकोनॉमिक्स। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। यू कैन पिक अप एनी मोर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आल्सो। यू कैन पिक अप इन स्टेट बोर्ड साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी, आईएससी में इकोनॉमिक्स प्लस हिंदी। ये अगेन ये सिर्फ सैंपल है, आपको अलग अलग स्कूल में अलग अलग पूछना पड़ेगा कि वहां पे क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो बोलने की बात अगर आपको मोटा मोटी समझ में आ रही है, सीबीएसई में आपको सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने, स्टेट बोर्ड और आईएससी में आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने। आईबी बोर्ड बोथ अगर आपने लिया, आपने इंजीनियरिंग और मेडिसिन दोनों लिया, तो आपका 5वां सब्जेक्ट इधर बायोलॉजी हो जाएगा सीबीएसई में। स्टेट बोर्ड में बायोलॉजी प्लस एक और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा ज्योग्राफी, और इधर बायोलॉजी प्लस हिंदी हो जाएगा। दिस इज हाउ, अगर आप दोनों में सवार होना चाहते हो, वेदर इट्स अ गुड एडवाइस कि दोनों में सवार हो, आई डाउट इट्स गुड। हमारे जमाने में आज से 25 साल पहले व्हेन वी वर किड्स, बहुत सारे बच्चे पीसीएमबी दोनों चीज करते थे, बट दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज रिकमेंडेड नाउ बिकॉज द कंपटीशन हैज गॉन मेनी फोल्ड। अगर आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स रखोगे तो आपके लिए वो कॉम्पिटिटिव होना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। सो डू वी एडवाइज? नो, वी डू नॉट एडवाइज। वी एडवाइज कि आप डिसाइड करो, आइदर यू वांट टू बी इन पीसीएम और यू वांट टू बी इन पीसीबी। दिस इज व्हाट इज आवर जनरल एडवाइस। You can have questions around this after my PPT and ask me. So ये हो गए combinations. If you have questions around this, please note down those questions. After the PPT, we'll answer those questions. चलिए, let's move ahead. अगर आप IB board में हो, तो it's very flexible. It varies from school to school. Generally, IB board में आपको 6 subjects पढ़ने पड़ेंगे, 2 sciences, 2 languages 4, 1 सोशल साइंस 5 और 1 कोई विजुअल आर्ट्स का 6। ऐसे 6 सब्जेक्ट्स आपको आईबी बोर्ड में पढ़ने पड़ेंगे, बट इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। इट विल वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट कि आप क्या लेते हैं, उस हिसाब से आपको आईबी बोर्ड में ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे। बट वहां पे भी करीब 6 सब्जेक्ट्स आईबी बोर्ड में पढ़ने, इट्स अबाउट 6 सब्जेक्ट्स टू सी। सो सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट इज द टेक अवे, आईसीएसई and state board में 6 subjects, IB में भी 6 subjects. तो ये हो गया take away of subjects. Now we come to the next part of the PPT. Whether you should go with an integrated option or a non-integrated option, and this is a real question. अच्छा, इसमें मैं चाहूंगा कि as parents you spend a lot of time in understanding what is integrated and what is non-integrated. And ये जो decision है whether what is right, what is wrong is up to you to decide. ये मैं कहता हूँ पेरेंट्स को, जैसे कोई पूछे आपका फेवरेट कलर क्या है, किसी ने बोला फेवरेट कलर मेरा ग्रीन है, किसी ने बोला फेवरेट कलर मेरा ब्लू है। अब ये बोलना कि ब्लू ज्यादा अच्छा है, ग्रीन कम अच्छा है, या ग्रीन ज्यादा अच्छा है, ये बेतुकी बात है। सो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डिसाइड विद योर ओन सिचुएशन। जब मैंने मेरे एल्डर बेटे के लिए डिसाइड किया था, तो हमने डीपीएस को क्विट करके हमने हमारे इंटीग्रेटेड ऑप्शन लिया था, because we had those kind of options. तो हमने integrated choose किया था, and I will tell you very quickly about what are these options. Integrated, non-integrated. Non-integrated पहले बताता हूँ। Non-integrated is जैसे आप अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं, regular after school hour coaching like you are doing in standard 10. आप सुबह स्कूल में जाते हैं, शाम को मेरे पास पढ़ने। This is what you will continue in 11th and 12th also. You will take a school like a DPS or a बाल भारती, like आप स्कूल लेंगे, आप मॉर्निंग में बच्चा स्कूल में जाएगा, शाम को हमारे पास पढ़ना। This is the non-integrated. This is what is the non-integrated option. Integrated option क्या है? You admission you take to CBSE school, but all coaching happens only at our class itself. तो आप शायद मेरे पास ही एडमिशन ले लें, मैं ही आपको सुबह से शाम मैं ही पढ़ाऊंगा, whether it is CBSE or state. तो अगर आप सीबीएसई में ले रहे हैं, तो आप गैप में ले रहे हैं या लोकमान्य तिलक में ले रहे हैं, दीज आर स्कूल्स जहां पे आप जाएंगे नहीं, आप हमेशा रहेंगे हमारे पास। और स्टेट बोर्ड में ले रहे हैं तो आप हमारे इधर ही हैं,
तो आप सुबह डायरेक्ट हमारे पास ही आएंगे और सिर्फ 3-4 घंटा या 6 घंटा जो भी पढ़ाई, यू विल डू इट एट आवर प्रेमाइसेस ओनली. स्टूडेंट विल गो टू स्कूल ओनली फॉर प्रैक्टिकल. साल में 10-15 दिन से ज्यादा स्कूल में, एंड दैट टू वी विल टेक इन आवर बसेस एंड वहां पे ले जाके लेके वापस आ जाए. ये और डिस्कस करेंगे. सो नॉन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड, फायदा क्या है? नॉन इंटीग्रेटेड इज समथिंग जिसमें प्राइमरीली बच्चे को 2 बार तो सेल्फ स्टडी का टाइम कम मिलता है. इंटीग्रेटेड ऑप्शन इज जहां पे बच्चे को एक ही बार वो रहना है तो उसको सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत मिलता है. क्या डिसएडवांटेजेस है? मोटा मोटी जनरली इसमें थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा रहता है बिकॉज सुबह उठ के स्कूल जाना है, लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है. इसमें क्या दिक्कत आती है? मेरे बेटे के साथ दिक्कत आई थी कि इवन ही बीइंग सो डिसिप्लिन, सुबह का टाइम वेस्ट करता था. एंड उसको बोलो कि भाई अभी है तो क्या डिड ही ऑप्टिमाइज इट? 6 महीने शुरू में वेस्ट करे, उसके बाद जब उसको समझ में आया कि दिस इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, तब जाके लेकिन फायदा बाद में मिला क्योंकि स्कूल का लोड नहीं था, तो ही वाज एबल टू कोप अप एंड डू वेल इन अदर. शुरू में तो हमको लग रहा था कि हमने डिसीजन गलत कर. और बच्चों से आजकल ऐसा हो गया है कि मेरे पिताजी जैसे या अपन पुराने जैसे नहीं कि पिताजी एक बार जोर से डांट देते थे तो घबराते थे पिताजी की डांट से. अब डांट भी नहीं सकते हैं. यू हैव टू आर्ग्यू एंड रीजन इट आउट विद द किड्स. तो वो आर्ग्यूमेंट एंड रीजन आउट में हमको तो एज पेरेंट्स 5-6 महीने लगे, तब जाके उसको समझ आया एंड ही रियलाइज्ड टू नो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग एंड देन ही अमेंडेड. उसमें हमको 5-1 महीने लगे. तो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू इंडिविजुअली decide what is right and what is wrong. What is UT Champions course? We offer both integrated CBSE as well as state board. CBSE में हमारे पास multiple school tie-ups हैं. I think he will tell us. अपने अभी YAC का स्कूल का tie-up है और कौन-कौन से tie-ups हैं अभी? हाँ, 2-3 tie-ups हैं हमारे, and you could pick and choose when you're coming to come for admission. We will be able to give you these tie-ups, and these are all recognized very good schools. You can go and inspect infrastructure of that school also. These are CBSE tie-ups. State board तो हमारा नीचे ही है, ground floor. आप first floor देखेंगे, we've already converted it into a junior college, physics lab, computer science lab, वो सब कुछ है. So that's our state board junior college. That's our integrated. Non-integrated is something that you would normally join a school, either a state board school or an ISC school or a CBSE school आप join करेंगे, and you will come to us in the evenings. This is what is UT Champions course. This is available for all boards. Admission practice after standard 10th. आपको 10th के बाद necessarily इन 3 में से decide करना पड़ेगा कि science, commerce या arts लेना पड़ेगा बच्चों. Next. Most schools do re-admission after standard 10. आप जिस स्कूल में हो, सपोज आप बाल भारती में हो तो बाल भारती भी बोलेगा मेरा री-एडमिशन, डीपीएस भी बोलेगा री-एडमिशन. कोई भी स्कूल दे वुड डू अ री-एडमिशन. बेसिस ऑफ एडमिशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्कूल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड दिस. ऐसा नहीं है कि ये आपको 12th 10th के एग्जाम के बाद सोचना है कि कहां पे एडमिशन. बी इन फॉर सरप्राइज. CBSE and ISC schools जनरली इनके एडमिशंस 10th के रिजल्ट के बाद होते हैं, लेकिन अभी कोविड में और सब में इन्होंने अपने एडमिशन, दे डिड नॉट वेट फॉर द 10th रिजल्ट्स. इन्होंने अपने खुद के क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए एंड दे स्टार्टेड देयर एडमिशंस. सो इट्स अ गुड आइडिया दैट यू विच स्कूल यू आर टारगेटिंग. अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड ऑप्शन ले रहे हैं तो आप स्कूल से अभी से ही बात करके रखिए कि आप 10th के बाद 11th में एडमिशन आपका क्या प्रोसेस है, एंड बात करके मालूम करके रखिए. नहीं तो मालूम पड़ेगा यू विल बी इन फॉर अ सरप्राइज कि नहीं हमने तो फॉर्म निकाल दिया, एडमिशन हो गए, अब सब बंद हो. अ स्कूल लाइक DPS इज वेरी पॉपुलर, नॉटी इन डूइंग दिस. उनकी वेबसाइट फंक्शनल होती नहीं है और मालूम पड़ता नहीं है, एंड दे डोंट अलाउ एंट्री इनटू द स्कूल. सो DPS इज अ वेरी पॉपुलर स्कूल, अ वेरी गुड स्कूल, लेकिन इट ऑपरेट्स इन अ वेरी मिस्चीवियस और मिस्टीरियस. दे डोंट फॉलो अ प्रोसीजर. तो उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए आप पहले से पूछ के रखिए कि भाई कब आपके एडमिशन हो. नहीं तो, और कई बार हुआ है पेरेंट्स आते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और सर उसका एडमिशन खत्म हो गया, हमको मालूम ही नहीं. एंड देन कैन यू विल हिट अ वॉल, यू विल नॉट बी एबल टू टेक एडमिशन. तो काफी सारे स्कूल्स ऐसे हैं, दे आर नॉट गवर्न्ड बाय कोई एक
ऐसा नहीं है कि सब स्कूल एक टाइम पे खोलेंगे, नहीं, दे आर नॉट, दे फॉलो देयर ओन इंडिपेंडेंट थिंग्स। सो आपको इसका ध्यान रखना होगा। स्टेट स्कूल देयर आर मोर सेंट्रलाइज्ड। फादर रैगनल में एडमिशन चाहिए आपको, ये जो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, ये डेफिनेटली आपके 10th के रिजल्ट के बाद एक कॉमन फॉर्म आएगा, उस कॉमन फॉर्म के अगेंस्ट आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें आपको अभी से कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। ये आपके 10th रिजल्ट्स के बाद होंगे। सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ योर स्टैंडर्ड 10th रिजल्ट्स। लेकिन अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के कितने स्कूल्स हैं? लिमिटेड स्कूल्स हर एक नोड में। वाशी में फादर रैगनल है, नेरुल में सेंट जेवियर्स है, और एक दो स्कूल्स ऑगस्टीन है, खारगर में शायद ये यहाँ पे गोल्फ कोर्स के पास एक स्कूल है, सीजीएम है, एक दो स्कूल्स हैं, पनवेल में एक दो स्कूल्स। तो दीज आर लिमिटेड स्कूल्स, तो उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये सेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट, आईबी स्कूल्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए, नाउ इज द टाइम। इनफैक्ट आई एम लुकिंग फॉर एडमिशन फॉर माय किड, तो अभी से ही मैंने चालू कर दिया है। एंड नाउ इज द व्हेन यू हैव टू अप्रोच एंड गेट एन आईबी एडमिशन नाउ। इनफैक्ट अभी आदित्य बिरला वर्ल्ड स्कूल में भी एडमिशंस बंद हो गए हैं, धीरूभाई में चालू हैं। आपको अभी अप्रोच करना पड़ेगा अगर आपको आईबी स्कूल में एडमिशन चाहिए। तो आईबी स्कूल एडमिशंस हैपन, दे डोंट वेट फॉर योर 10th रिजल्ट्स, वो अभी ही अपने क्राइटेरिया से अभी ही एडमिशन, तो आपको अभी करना पड़ेगा एंड यू हैव टू गेट स्टार्टेड राइट। I think I'm largely done. Now, what can UT support you? अगर आपको engineering करनी है, we have a course. Medical करनी है, we have a course, UT Champions. Commerce करनी है, we have tied up with UT Gurumukh, हम CA Foundation and Commerce के सारे courses भी कर रहे हैं। अगर आपको CUET करना है, and this is excellent, you know, imagine studying in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। पहले आपके और मेरे जमाने में अपन सोच नहीं सकते थे यहाँ से बैठ के we can get a JNU admission or we can get a BHU admission. Now you can get all of that through CUET. So we are preparing you through that. We'll be able to do with that. आपको IPM करना है, मैनेजमेंट डायरेक्टली इन IIM इंदौर, 5-year कोर्स करना है, we are preparing you for that and study abroad. So today we are focusing on engineering and medical. Later on we'll focus on these other courses. अगर आपको ये करना है, इनके रूट्स अलग हैं। Today we are talking about engineering and medical. So engineering and medical में now I'd like to call upon UT has joined hand with Champions for competitive exam preparation, and that is Professor R.K. Singh, जिनके बारे में मैंने introduce करा। Manish sir, is R.K. sir there? Yes sir, very good morning, very good. हाँ, नमस्ते sir, नमस्ते sir. Namaste so sir, very good Champions morning. Academy has produced the best results in Navi Mumbai. We have R.K. sir, and I'd like to take it over from here. R.K. sir would take over. I'd like to invite Professor R.K. Singh for Champions Academy. तो मनीष सर ये कैसे करेंगे? Will इसको ऑपरेट मैं करूंगा या कैसे करेंगे? सर R.K. सर, आपका क्या कंफर्ट है? आप कुछ हम रन I करें? have one or two slides. I have 1 or 2 slides to show. तो सर आप ऑपरेट करेंगे, मैं इसको स्टॉप शेयर करूं and then you will take it Yes, from your yes, end? yes. ठीक है सर। सर आप स्पॉटलाइट भी हटा दीजिएगा तो फिर सर दिखने लग जाएंगे। Yes sir. I have removed. मैं सर को स्पॉटलाइट बना दूं क्या? चलिए सर, over to you sir, please. Yes sir, thank you very much. Just a minute. So I think there are many parents who are sitting offline as well as online. So very good morning to all of you. Can you hear me all clearly? Am I audible? Very much. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning. Anubhav sir has explained you in very much depth, and I would like to focus on mainly JEE NEET, what all is to be done, why you should join a coaching class, whether you can join a tuition centers, which kind of integrated, which will be more helpful, integrated or non-integrated, all this, and then we'll throw it open for your questions and answers. So one simple question I would like to ask first: what do you think is required to crack these national level exams? Students can also participate. They can tell us whatever their parents have been telling, you are not sincere. That means sincerity is required.
Yes. Dedication and discipline. Yeah. There are many, Consistency. Consistency. Let me write them one by one. So consistency is required. Discipline is required. Dedication and discipline. Yeah. Dedication is required. Time management. Time management required. Practice. Practice. Yes. Very good. Practice is required. What else, students? आज सब कुछ बता दो. Aim, sir. Aim. Multiple vision. Multiple. Guidance. Correct. Good coaching. Aim also, sir. एम भी रहना चाहिए. एम या टारगेट. तो अगर मैं ये सब Structured approach रहना चाहिए, sir. करेक्ट. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. अगर मैं ये लिखना शुरू करूं तो मुझे लगता है ये पेपर कम पड़ जाएगा इसको लिखने के लिए, ना. So many things are required in our children, you know. जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं और 11th में जा रहे हैं, they should have all these qualities which is expected by parents or the teachers, and then only they should be cracking this exam. This is our general assumption. Okay, but situation is not so. Now these students only are going to crack these national level exams जिनके अंदर ये सारी कमियां भी होंगी. बहुतों के अंदर not 100% of these qualities would be available. Okay, so suppose my child is little lazy. Whenever we plan for school, he is always late. So what do you do as parent? We get up along with the child. We make him take bath. We make him have his breakfast. We make him, you know, get ready. And then हाथ पकड़ के हम छोड़ के आते school, right? So we provide that kind of hand holding, and slowly that becomes a habit. And then child starts going to school on time, right? So you went on mute. Yeah, I was saying, so if my child is reaching late to the school and we provide good hand holding to the child and we make him reach to the school on time, and slowly that becomes a habit. Similarly, if good academic hand holding is available, then ये qualities में से कुछ qualities ऊपर हो या नीचे हो, final result is not dependent on them. So what kind of hand holding we at UT Champions provide to our children? What kind of systems, what kind of homework, what kind of, you know, approach we take at UT Champions? Before I come to that approach, let me tell you a brief history of how these coaching classes came into picture. अगर आप पुराना टाइम देखें बिफोर 1970s का, तो only school was sufficient. My slide, everyone is able to see? Only school was sufficient. नहीं, बच्चे रेगुलर स्कूल में पढ़ते थे और सेलेक्ट हो जाते थे. ठीक, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे स्कूल में सेम परसेंटेज आती है बच्चे की, एंड इफ द इंजीनियरिंग कॉलेज रिक्वायर्स ओनली 40 सीट्स एंड सेम परसेंटेज के काफी सारे बच्चे हैं, तो हाउ वुड दे बी अलॉटिंग देयर सीट्स? So they started entrance exams. Okay, so selection to good engineering colleges were no longer based on your percentage. It was based on, you know, entrance exams. And for entrance exam, they were asking questions little beyond the syllabus, which was available in 11th and 12th standard. And for that beyond syllabus study, there were a few correspondence courses, brilliant tutorials, Agrawal classes, here, universal tutorial, you can assume that we are carrying the legacy of Agrawal classes here, the original Agrawal classes. So correspondence course was a must. The child was doing regular school plus these correspondence courses. And जो भी बच्चे ये दोनों कर रहे थे,
उनका सिलेक्शन हो रहा था। फिर क्या हुआ, करस्पॉन्डेंस कोर्स बड़ा होता चला गया, एंड करस्पॉन्डेंस कोर्स को समझने के लिए ट्यूशंस की जरूरत पड़ी, एंड हियर केम ट्यूशंस फॉर JEE NEET. Tuitions for board were available before, but tuitions for JEE NEET were not started. And since the syllabus was beyond 12th standard, the earlier tuitions for JEE NEET were started by the university teachers. अगर आपको आपके ज़माने में याद हो, हमारे ज़माने में तो हम लोग पढ़ने जाते थे, and the teachers who were teaching tuitions in different cities like Jaipur, Agra, Allahabad, Lucknow, Delhi, Nashik, Pune, all kind of 2-tier cities also. Majority of the teachers were university teachers who were teaching physics, chemistry, mathematics, biology in the university in the first year of their BSc or second year of their BSc, MSc courses. So such teachers started tuitions, and we were traveling from one place to another place for tuitions and after the school hours. But slowly this competition increased. And after the school hours, if child was investing his time here and there in traveling, in attending only tuitions and less of the time for self-study, the preparation used to fizzle out at the later stage because child was not getting time. And that is how, in these years, if you see, majority of the coaching classes started, where you get the tuition of physics, chemistry, mathematics, along with the test series under one roof. Okay. So the reason why these coaching classes were successful, they were able to, manage timetable for the child. So time management was good. Testing, PCM individual tuitions में बच्चे जा रहे थे तो individual subject से test हो रहे थे, but actual test was PCM based combined or PCB based combined test. Okay. So actual mock test they were conducting. And above all, synchronization. That is, if a child was going to individual tuitions, then individual teacher was interested. Like suppose I'm teaching physics. I would want that on my notice board, there are percentages capped on for the children. My all of children got 90% or above. So every teacher was ambitious and they were wanting their students' percentage to be higher. So they were giving more and more homework, and that homework may exceed beyond 2-3 days for one subject. अगर कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा था तो पूरे 6 दिन फिजिक्स का ही होमवर्क करता था, and chemistry और math इग्नोर हो जाता था, because that teacher was not responsible for chemistry and math. He was teaching only physics. Okay, parents को लगता था कि हमारा बच्चा शायद chemistry maths में weak है, that is why he is scoring less. But situation might or not have been same. So when am I audible clearly? Yeah. Okay. Yes. So in synchronization, when 3 teachers were on the same platform, if one teacher was focusing more on physics, then other teachers would ask the question, if you focus only on physics, how would the child clear chemistry and mathematics paper? In fact, जहाँ पे बच्चा weakest है हमें वहाँ पे ज़्यादा focus करना चाहिए, rather than जिसमें ज़्यादा अच्छा है उसमें और ज़्यादा अच्छा बनाने की. Okay, because तीनों subject में एक minimum cut off भी पार करनी होती है बच्चों को. So this is how these coaching classes started producing better results. Despite good teachers were available in tuitions as well as coaching classes, both places. But coaching classes started producing better results because of this synchronization. Okay. So coaching classes popular होते चले गए. अगर आप ये time देखें 98 से लेके 2007 तक का, quota coaching classes became very, very popular. Now the question is, you as parent must know कि ऐसा क्या था कि कोटा कोचिंग क्लासेस ज्यादा पॉपुलर हो गए, ऐसा क्या वो पढ़ा रहे थे in this time, and remaining coaching classes other parts of country were not able to deliver that result. So we did that research and we found that when other part of country was busy taking coaching only in 12th standard, Kota started their 2-year courses. And when I came to Mumbai in 2004, when I used to take this kind of seminar,
and I used to ask parents to join after 10th standard, there was hardly any batch available in coaching classes after 10th standard. Everyone, like including myself, we prepared in 12th standard. हमारे पेरेंट्स का यही व्यू रहता था कि अब 11वीं हो गया है, इस साल बोर्ड्स है, तो बोर्ड्स के लिए अच्छा करना है along with some kind of competitive exams like IIT JEE or NEET exam, CPMT exam. तो सब बच्चे 12वीं में जाके कोचिंग लेते थे. While in Kota, this kind of preparation started just after 10th standard in April itself. Okay, so they had an advantage of 1 year. Competition is a race. The earlier you start, the more are the chances of winning that race as compared to others. तो इस हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा होना शुरू हो गया. Then कोटा के बाद में अगर आप देखें 2007 से 2015 तक का टाइम, हैदराबाद कोचिंग सिस्टम्स became very popular. No. It went on mute again. Sir, mute पे चले गए आप. I don't know. It gets muted automatically. I don't mute it. Yeah. So in the next decade, if you see 2007 से 2015 का time, Hyderabad coaching systems became more popular. तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि regular coaching से कोटा coaching system में क्या change हुआ. That was 1 year course got converted to 2 year courses. And Hyderabad coaching system में क्या change हुआ? The 2 year course got converted 2 year integrated. So Hyderabad, that was Andhra Pradesh, was the place which started in India for the first time school plus coaching together in the morning time 8 o'clock to 2 o'clock. यानी यहाँ पे जो बच्चे और कोटा सिस्टम में या और किसी सिस्टम में पढ़ रहे थे वो रेगुलर स्कूल भी कर रहे थे और शाम को कोचिंग क्लास करते थे, तो उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम बचता ही नहीं था. And that is when Hyderabad started bulk coaching in integrated format. And integrated format में उन्होंने better result produce करना शुरू किया as compared to Kota. Now, if you see the situation, Hyderabad, if you want admission to any coaching class in 11th standard in integrated program, they do not have any non-integrated programs. Hyderabad में nearly 400 schools are there which run only integrated program for JEE and NEET. In Bombay, we don't even have 40 schools which run integrated programs. So there is a huge difference in the mindset of the students who are preparing, mindset of the coaches who are training, and mindset of the parents who are taking decisions. So आज की डेट में, if you want a good coaching class in Hyderabad in 11th standard, you don't get it because it is all school integrated and the seats full in 11th standard, in 9th standard itself. So you have to take admission to 9th standard. So 9th, 10th, 11th, 12th, 4 years of coaching. The system has been converted to now 2 years to 4 years. And in that 9th standard also, there would be an admission test. Preparation of that admission test would start in 6th standard itself. So effectively, child is preparing for JEE NEET kind of courses right from 6th standard. और हमारे बच्चों का मुंबई में ऐसे बच्चों के साथ competition है. Okay, so we have to realize this fact that there are children who have already started. There are children who have already decided. There are children who already know that apart from their school, apart from 1 or 2 hours of exercise, we have to give all our time for studies. Clear? So if you are on those lines, then probably I can explain to you how we are helping the children here. हम लोगों ने कोटा, हैदराबाद सारे systems analyze किए, and then we came on to the conclusion and launched this coaching class at UT Champions. And we call this system as Kota 2.0. That is higher upgraded version of Kota, or Hyderabad 2.0. That is high. Sir, आप stuck हो गए, sir. I think there's some technical problem at his end.
Wait for a couple of minutes. He should be back. I'll check. He's coming back. I think it got disconnected. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible now? Yes. Yes, sir. You are. I was saying that at different places like Kota or Hyderabad, whatever coaching systems they have created, we analyzed that coaching system. And when we came up with our own system at UT Champions, and this system we have divided into two parts, learning system and scoring system. And, I will tell you, we have mapped the journey of child in this learning and in the scoring in the final exams. General learning pattern क्या होता है कि child starts from home, comes to the coaching class, listens to the lecture, prepares his or her notes, goes back home, does the homework. Next class again, their child would be asking the homework doubts. Then when all the doubts are cleared, chapter is done, then there will be a test. If still found weak in the test, then child would be attempting some more worksheet on that particular chapter. Okay. So this is entirely the learning system. This is what, majority of the children do, or majority of the coaching classes are helping in this manner. Attendance, how we take care of the attendance part and how this system can be made better than again. Yeah. Wait, just. अनुभव सर मैं चेक करता हूँ. हाँ ठीक है सर. Say in Mumbai or Pune or other cities, these coaching classes put nearly 60, 70, 80 students, if not 200. Kota mein this actual strength is 200. Okay. हम लोगों ने सोचा कि CBSE and ICSE must have done some kind of analysis, some kind of psychometric studies, and then only they have come up with the 40 students per batch per division. So CBSE or ICSE ne, a lot of students are not getting good education in India. It is very easy for government to announce that this limit from 40 students to 60 or 70 or 80, but they are not doing so because they understand that one teacher in one go would be able to focus on not more than 40 students. Okay, so we also adopted that rule blindly, that in our class also we should not have more than 40 students. That's why you will find our fees to be slightly higher as compared to Kota and Hyderabad coachings. Okay, many times parents will be asking, we are getting admission at some XYZ cost in some Kota Hyderabad coaching, and you are giving us at a higher cost. So this is precisely the reason that we make lesser number of students sit in the class as compared to Kota and Hyderabad coaching, to remain personalized for the child, to remain focused on the child. Okay, but this attendance should be 100%. Very, very important. How do we maintain 100% attendance? There would be places, there would be times when we might not be in best of health, we might not be in best of our energies, we might miss some lectures. And when we started this system, champion system in 2012, that time itself we realized that child needs to be given extra support apart from the lecture. Okay, now that was a time when he started providing recorded lectures. So we are the only coaching class who are providing these recorded lectures right from 2012. All Bajus and other coaching classes have come up recently with their recorded lectures and courses. Okay, on our app, these recorded lectures we have been providing for last almost 10 years, so that if child is absent in any class, that particular recorded lecture is available,
and child does not miss out. Child may not sit blank in the very next class. Okay, at home also child can attend, and that was the reason in Corona period, majority of the coaching classes got closed or reduced their student strength. But at UT Champions, we doubled our strengths, almost double number of admissions in Corona period, because this kind of systems were already available with us who were required in Corona period. अगर हमारा अटेंडेंस 100% है तो क्या हमारा अच्छा रैंक आएगा? कोई जरूरी नहीं है. क्लास में आके अगर हम सो गए तो ना, सो वी हैव टू राइट गुड नोट्स. अच्छे नोट्स हमारे बच्चों को लिखने हैं. तो पहले अच्छे नोट्स क्या होते हैं वो समझ में आना जरूरी है. Okay, whatever teacher is writing on the board, if we copy that, would it make a good note? Answer is no. और क्या चाहिए एक्स्ट्रा? जैसे बोलते हैं ना, read in between the lines. जैसे बोलते हैं read in between the lines, we have to write in between the lines. Your note should be written in such a manner, in your understanding manner, in such a manner that the child understands. Because when teacher is explaining, child is getting a lot of thoughts. And if your notes are synchronized with those thoughts, then you understand it better. Okay? हर बच्चे के separate notes, अपने notes होने जरूरी हैं. Many times what children do, if they have missed something, they will just copy down other students' notes. अभी हमारे बच्चों को आदत पड़ चुकी होती है कि whatever is written on the board, even if they close their eyes, they can copy all that. Okay? So only copying the stuff which is written on the board is not a good note. To help the child, now this kind of thing is happening in all the coaching classes. All the coaching classes, students are making their notes. But what we do extra is, past years में जो हमारे बच्चों ने हमारे क्लास में नोट्स लिखे और जिनके अच्छे रैंक्स आए, AIR 55, AIR 52, AIR A1, ये सारे बच्चों के नोट्स हमने टाइप राइट कराए और ये भी एज ए सपोर्ट हम बच्चों को देते हैं. अगेन दैट डज नॉट हैपन इन एनी कोचिंग क्लास इन हैदराबाद और कोटा. ओके, I'll just show you. For example, this is a chapter, Modern Physics, lecture series, and in this you will see these are the notes which are written by students. And this also you will find some jokes also written, because sometimes teachers would be cracking some jokes in the class, and some of the students would be writing those jokes also, because by reading that joke they are able to reconnect to what was discussed in the class. Okay, so such kind of notes after every lecture we would be providing to children. Okay, मेरी attendance अच्छी है, attendance 100% है, अच्छे notes भी लिखे हैं. Would it ensure a good rank? Answer is no. What is required is understanding of the topics. Okay, so for understanding sake, you know, जैसे मैं हमेशा ये example देता हूँ कि suppose हमारे घर पे किसी की तबीयत खराब हो, भगवान ना करे, लेकिन बाई चांस अगर होती है और हमारे पास दो चॉइस ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल है. One is a recent pass out, a gold medalist from Mumbai University and practicing for last 2 years. Other one is also of similar qualifications but practicing for last 20 years. हम लोग किसके पास जाएंगे? Of course जो 20 years practice कर रहा है, right? Similarly, Yes, sir. we are academic doctors and कोई भी टॉपिक समझाने में with similar qualifications, even if we give IIT graduates, AIMS graduates as our teachers to students, लेकिन जो एक नया टीचर होगा और जो एक पुराना टीचर होगा with similar qualifications, the difference is huge. एक जो पुराना एक्सपीरियंस टीचर होगा वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा के 5 मिनट में निकल जाएगा, तो जो नया टीचर होगा वो 15, 20, 25 मिनट तक सोच ही रहा होगा, एफर्ट मार रहा होगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे बच्चे को ठीक से समझ में आएगा. ओके, ये डिफरेंस होता है. नया डॉक्टर होगा तो और कोई ऑपरेशन करना है तो बहुत सारा टाइम तो उसको नस ढूंढने में चला जाएगा, कहाँ से काटूं तो ये ऑपरेशन ठीक से हो, कोई गलती ना हो, राइट? Similarly, you know, conceptual understanding of the subject, especially for exams like JEE NEET, is very important. And here we have employed the teachers who have minimum 10
10 plus years of experience. Majority of them are, IIT graduates. A few of them are BITS graduates. A few of them are famous, respected teachers in this coaching system. Okay. So we have senior faculties. This is not possible in coaching systems of Hyderabad and Kota because you cannot produce a 10-year experience faculty overnight. Okay. So वो क्या करते हैं, नए faculties, नए IIT grads, नए टीचर्स, जो बैचेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें सेग्रीगेशन होगा, और जो बच्चे टॉप बैच में चले जाएंगे उनको पुराना टीचर मिलेगा, जो बच्चे नए बैचेस में रह जाएंगे उनको जो लोअर बैचेस में रह जाएंगे उनको नए टीचर्स मिलने वाले हैं, एंड दैट एडवर्सली अफेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड. ओके. तो हम लोगों ने ये चीज सोची, हम लोगों ने सोचा कि जहाँ पे हम लोग सीनियर टीचर नहीं दे सकते हम उतने बैचेस नहीं बनाएंगे. दैट्स व्हाई we have limited number of seats and limited number of admissions. Okay. अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, अटेंडेंस अच्छी है, अच्छे नोट्स लिखे हैं, तो क्या मेरा अच्छा रैंक आएगा? कोई जरूरी नहीं है. Next part is homework, 60 questions per day. Now, major problem, apart from the children getting good teachers in coaching classes, the major problem children face is backlog. अगर आपकी फैमिली में कोई भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा हो, दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी में, आप उनसे पूछिए कि वी आर अज्यूमिंग दैट विच एवर कोचिंग क्लास यू आर गोइंग, यू आर बीन गिवन गुड टीचर्स. You just tell us what is the problem number 2, and the child will tell we have a lot of backlog, because 9th and 10th standard में एक चैप्टर बच्चा करता था और उस पे 30-40 questions after going home, which are given by the coaching classes or the NCERT textbook at the back, उतना कर लिया तो हो जाता था. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे every chapter has nearly 500 questions. And what coaching classes in Hyderabad and Kota are doing? They would finish the chapter and then announce that you can do all these 500 questions and come to the next class. Even if you are the brightest child in the class, you will not be able to do all 500 questions. So even the brightest child is going to have backlog of homework. That's where we decided, no, we cannot give this kind of homework to the child. So what we do, we give the homework every lecture. Every lecture 60 questions are given. Okay, these 60 questions child is supposed to do after every lecture, and the very next lecture child would be asking those doubts. Okay, so every lecture at Champions Academy is a doubt lecture to start with, and then only we would be teaching the next part. Okay, so next lecture child would come and there would be doubt sessions. We have 3 levels of doubt clearing. The lecture itself is a doubt lecture. Second one, before every test, we have dedicated doubt lectures, DDL, dedicated doubt lectures. And third, for all these 60 questions, we have prepared nice videos on our app. Every question, 3 to 2 minutes videos. So if you have a doubt in 45th question, you can just click on 45th question and watch that 3-minute video and close it. That kind of facility is available. And this kind of facility where you can view all the questions as solved questions and videos of those questions is not available in coaching classes in Hyderabad and Kota. Okay. This much ensures good learning of child of the syllabus. Okay. Then after learning is done, scoring is very important in the exam. Scoring is different. Now, हमने जो कुछ भी सीखा अगर हम भूल गए, अगर हमें याद ही नहीं आया एग्जाम में, तो हम कैसे हमारे मार्क्स आएंगे? So revision is required. For revision planning, we instruct children to divide the entire questions into 3 categories. First category is you will remember it for always. This kind of smiley. दिख रहा होगा ये. Second category, you think you have cracked the question, but you might forget. And third category, you did not get the question, you asked the help with the teacher, with your parents, with your friends. So ये 3 categories में सारे questions को divide करना है. So if you see our Abhyas exercise, you will see these categories
of homeworks. आपको ये दिखाई देगा, देखो ये blank smiley दिखाई दे रहा है. In front of every question, this blank smiley is given. Okay. So this kind of revision planning children need to do. Test practice. The major difference I saw in Hyderabad coaching system and Kota coaching system was their testing patterns and testing frequency. While Kota systems were conducting tests once in 3 months, अभी उनका frequency थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन पहले they used to conduct one test paper in 3 months, a quarterly test basically. Okay. While Hyderabad systems were conducting tests weekly, and now we are conducting tests almost twice in a week. There are 2 papers in a week. Okay, तो उसकी भी डबल है हमारी फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू हैदराबाद सिस्टम्स. सो बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन हाँ अगर आप हमारे सिस्टम में आओगे तो आपको 2 टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे. सो वी हैव वीकली असेसमेंट टेस्ट WATs, we have monthly assessment test, we have quarterly assessment test, then we have part syllabus test PSTs, and then we have full syllabus test papers. So in these 2 years, child would be writing nearly 150 test papers. Okay, and all these 150 test papers reports are available on our app. Okay, analysis report of these test papers would be available on our app. Okay, now these test papers are very very important. Okay, बहुत सारे बच्चे बीच में बोलेंगे कि हमें ये टेस्ट पेपर देना नहीं है क्योंकि हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है. हमारा सिलेबस मंडे टू फ्राइडे में खत्म हुआ, मंडे टू सैटरडे में खत्म हुआ, संडे को ये टेस्ट आ गया, तो हम कैसे प्रिपेयर करें? एवरी वीक दिस टेस्ट हैज टू बी अ वॉक इन टेस्ट. तो एट द एंड ऑफ 2 years क्या होता है, हमारे बच्चे खुद ही कहने लगते हैं कि सर इतने सारे टेस्ट पेपर हमने दे दिए कि वाइल वी वर राइटिंग द एक्चुअल JEE टेस्ट, हमें ऐसा लग रहा था कि हम UT चैंपियंस के टेस्ट दे रहे हैं. वी आर जस्ट राइटिंग द सेम टेस्ट टुडे आल्सो. ओके, तो आपका एग्जाम फियर जो होता है that will be over if you write if you write maximum number of test papers. Okay, so we ensure that children are writing these 150 test papers in these 2 years. We have also come up with something called elegant solutions while in revision, while for scoring. There are questions which can be done logically, within few seconds, which are generally done by a regular method in 3-4 minutes. Okay, तो 3 minutes के क्वेश्चन को आप 30 seconds में कर सकते हो. ऐसे हमने एलिगेंट सॉल्यूशंस ढूंढे और ऐसे एलिगेंट सॉल्यूशंस हम अपने रिवीजन में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. और हमें हर साल हमारे बच्चे आके बताते हैं कि एटलीस्ट 3-4 questions I could use these elegant solutions. Now, if any child uses these elegant solutions, the time is saved. जिस क्वेश्चन में 3 minutes लग रहे थे उसमें 30 seconds लगे, एंड 4-5 questions में तीनों सब्जेक्ट में अगर यूज किया हमने तो 15-20 minutes can be saved and 4-5 more questions can be solved. And one question is equivalent to 500 ranks in JEE, more than 500 ranks. Remember this. 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं और there are only 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, 10 lakh बच्चे बैठ रहे हैं, and only 300 marks are there to separate them. 300 marks cannot separate 10,000 20,000 ranks. उसमें भी the child who's getting 1 mark or 2 mark would not be getting selected. So there is a minimum score required to get selected, say 100. So 100-150 वाले बच्चों का minimum score, and उसके ऊपर के 150 marks are separating 15,000 ranks. So 1 mark separates nearly 100 ranks. So if we do one question wrong, plus 3 minus 1, there would be a difference of 4 marks and 400 ranks difference. Okay, so each mark is very important, especially in competitive exams. और उसमें अगर हमने 10-15 मिनट बचा लिए by using elegant solution method, then it gives us edge over others. Okay, and over and above, we have integrated system. Any majority of Kota coaching classes which are available in Mumbai do not have their own junior college. They have all the tie-up system, and tie-up systems may not be working well.
बहुत बार desynchronization होता है, and that is why we have come up with our own college. So we have at UT Champions Junior College within Navi Mumbai, and we put our children for HSC board specially there. In CBSE, we have tie-up facility available, as sir was saying. Okay. So this is our success mantra: learning plus scoring is equal to success. And if our children follow this, then with the regular intelligence also, children would be able to crack this kind of exam. आप सोचिए ना, हैदराबाद या आंध्र प्रदेश, including Telangana, has a population of only 5 crores, and number of selections to JEE NEET are more than 4,000 out of 10,000. So 50% of the selections you can think of from one single state with 5 crore population. Remaining India population is 125 crores and number of selections only 5,000. तो अगर हम लोग उससे बेहतर सिस्टम से जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे बच्चों का भी परसेंटेज सिलेक्शंस ज़्यादा हो सकता है. And this we have started proving. On 1 year back, we got All India rank 1 in JEE, which was better than any coaching class in India. And slowly, out of very few students, like out of 200 students, or 50 or more than 50 students are getting selected in JEE IIT alone. Around 50 students are getting selected in BITS Pilani. Out of 100 students we teach in NEET in Navi Mumbai, more than 25 students are getting selected into government medical colleges. So very important is the percentage result which our children are getting. So admission process and further, I think we would talk to you one-to-one, and we'll let you know how we are proceeding. We are definitely going to give chance to our top 50 students first, and then the later students. That is why this meeting is capped exclusively, as sir was saying, with all you people. So once you gave your green signal to us, then we would get to know how many seats are free and how many seats we can fill the other students out of the available seats. Okay. Anubhav sir, over to you, sir. Are you there? Yes, I'm there, sir. Yes, sir. Sir, if you could stop sharing your screen, then I will go. Yeah. One more last information I would like to give. We have seen in these years that, in fact, 2007 onwards, that majority of the selections are from integrated program. And if you see last few years, there are hardly any selections in any national level ranking from non-integrated programs. बहुत सारे बच्चे हैं जो non-integrated programs में coaching classes में हैं, and if you see the ranks which are being displayed in the advertisements of different coaching classes, you just find out yourself whether child was studying in integrated or non-integrated. So my personal advice to all the parents and students is that you should be going for integrated program, because then only child is able to focus on this kind of preparation and least of the distractions. Okay. In fact, Anubhav sir as a parent was there 2 years back on the same chair on which you are sitting, and he decided for a non-integrated program in DPS. Then my interaction with him and Yash, and then after a month or so we concluded that we would put Yash into integrated program. So he also himself decided 2 years back, and then, as he said, for 2-3 months he found it difficult initially to how to invest that time, because first few months the syllabus is not very fast, the syllabus is slow, and child is focusing on 3 subjects PCM more. So child gets more time, and parents feel that child is free, but actually this is not the case. When the real pressure starts,
that is the time when we want the time should be available with the child. And if there is a sincere child and that there he or she is in pressure and time is not available, then nothing much parents and teachers can help him to go into a successful career. When child wants more time and time is not available. Okay, आप देखो कि टिपिकली जो होमवर्क हमारे बच्चों को मिलता है, टिपिकली हमारे बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो मॉर्निंग जो भी उनका टाइम है 7 to 2, ये टाइम में स्कूल, यानी करीब करीब 8 hours लग जाते हैं गोइंग कमिंग एंड अटेंडिंग द स्कूल. ओके, फिर अगर हमारा कोचिंग क्लास कहीं पे है तो देयर इज नो कोचिंग क्लास विच इज लेस देन 4 hours, and 8 hours are required for sleep also. This is coaching. So here 20 hours are gone. Remaining 4 hours, 24 hours में से बच्चे के पास 4 hours बचते हैं, और 4 hours में उसको होमवर्क मिलना शुरू होता है. सपोज 6 to 7 hours का सेल्फ स्टडी करना है, तो स्कूल आवर्स में वो पॉसिबल नहीं होती है. ओके, एंड विथ कीपिंग दिस इन माइंड, वी हैव दिस नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नॉट अवेलेबल एट ऑल आवर सेंटर्स. ओके, हम लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ हमारे सेंटर्स पे नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बंद ही कर दिया है नवी मुंबई में, बट स्टिल आई थिंक 1 or 2 सेंटर इट इज अवेलेबल. हम लोग उसको आपको बताएंगे डिपेंडिंग ऑन विच सेंटर यू बिलोंग टू वाइल टेकिंग एडमिशन. ओके, अगर हम लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जाते हैं तो स्कूल प्लस कोचिंग ये पूरा का पूरा 6 to 8 hours में फिनिश हो जाता है, एंड देन चाइल्ड सेव्स दीज 4 hours एक्स्ट्रा, एंड दीज 4 plus this 4 मिला के 8 hours बच्चे के पास बचते हैं. ओके, so these 8 hours are more than sufficient for self study or the homework which we are giving. 60 questions homework typically requires 4 to 5 hours, but this homework eventually increases to 100 questions as child enters into 11th standard to 12th standard, and that is when the pressure starts and बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है. हम लोगों ने एक और क्राइटेरिया डिसाइड किया था इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड चूज करने का. We divide students into 4 categories: highly intelligent, highly sincere. First category, अगर हमारा बच्चा highly intelligent, highly sincere कैटेगरी में आता है, highly intelligent का मतलब फास्ट है, काम फास्ट कर देता है. highly sincere यानी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, child does not require any nagging. तो उसको आप इंटीग्रेटेड दिलवाओ या नॉन इंटीग्रेटेड दिलवाओ, दोनों में ही सक्सेसफुल होगा. दिस चाइल्ड हु इज हाईली इंटेलिजेंट, हाईली सिंसियर. ओके, सेकंड कैटेगरी, हाईली इंटेलिजेंट बट एवरेज सिंसियर. दिस इज व्हाट द मेजॉरिटी ऑफ टुडे स्टूडेंट्स बिलोंग टू, स्पेशली इन मुंबई, कि इंटेलिजेंस खूब सारा है लेकिन सिंसियरिटी में एवरेज है. काम कराने के लिए थोड़ा नैगिंग करना पड़ता है. तो ऐसे बच्चों को अगर हमने नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में डाला तो स्कूल को ये लोग बोलते हैं कि मुझे कोचिंग क्लास का होमवर्क है इसलिए स्कूल का होमवर्क नहीं किया है, और कोचिंग क्लास को बोलते हैं हमारे स्कूल में एग्जाम्स हैं या स्कूल का कुछ टाइम टेबल है इसकी वजह से मैंने कोचिंग का होमवर्क नहीं किया है. यानी फाइनली दे विल हैव सम और द अदर वे टू कन्विंस देयर पेरेंट्स, कन्विंस द टीचर्स टू नॉट नैग देम, एंड फाइनली इट इज नॉट सजेस्टेड कि they should be put under the dual reporting role, that is school and coaching separately. ऐसे बच्चों को अगर एक ही रिपोर्टिंग में डालोगे आप, ओनली इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जहाँ पे एक ही वन सिंगल शेड्यूल इज देयर, तो पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, एंड दे वुड हैव एनफ टाइम टू इन्वेस्ट विद अस. थर्ड कैटेगरी, एवरेज इंटेलिजेंट बट हाईली सिंसियर. ये बच्चे जो हैं ये थोड़ा काम करने में स्लो होंगे, हो सकता है उनको वही 60 क्वेश्चंस का होमवर्क करने में 4 घंटे की जगह 5 घंटे लग जाए, बट दे आर हाईली सिंसियर, यानी दे विल डू देयर वर्क विदाउट नैगिंग. ऐसे बच्चों को मोर टाइम इज रिक्वायर्ड, एंड मोर टाइम is available only in the integrated program.
not in non-integrated. ऐसे बच्चों को अगर non-integrated डाल दिया, they will themselves get frustrated because they wish to study, but they are not getting time to study. Okay. And last category, average intelligence and average sincere. ऐसे बच्चों को integrated program plus parent को coach की तरह behave करना पड़ेगा. One of the parents have to take responsibility of monitoring the child on every hour basis. If you cannot spend that much of time, and if you are only dependent on, say, the teachers or the coaching, then it will really be difficult to make this child focus and make this child work on with one single objective. तो ऐसे केस में parents का role काफी बढ़ जाता है, and that is when a coach is required. So over to you, Anubhav sir. This is what I had to tell. I think now any questions which are left, you can probably unmute and ask. Anubhav sir will handle, and I would be supporting. Yes, sir. So allow me to just very quickly finish this and then throw the house open for question answers. If you can stop share your screen, sir. Yes. Okay. So thank you very much, RK sir, for this. One sec. So let me just quickly wind it up. So we at Universal Tutorials, we are based on UT Performance, a special session which is being conducted for the top 50, that is today. A special scholarship is being extended. For the rest of the students, this will get open eventually in the next month, and a scholarship test ke baad ye cheez hogi. So all of you will receive a letter which you must have received. Then if you express interest, then we will take this forward. You will be contacted on a one-on-one basis by our champions team. Important takeaways, meet official admission counselor, take your time to decide which course, prepare well for your chosen exam, and then succeed. Now, finally, we started with lots of questions. I hope we've tried to answer, but now I'll throw the house open for question answers. But before that, if you'd like to meet us separately, then you can meet the counselor either online or over here. You can call up this number and we'll be more than happy to schedule an individual appointment with you. And you can note down this number. This is our central line number. I keep it on. It's Jyoti 77-188-98822. That's our central number, and she'll be able to take the appointments. Now, if you want a PDF of this PPT, please send a hi to this WhatsApp. The WhatsApp number is 771004690, and this is Jyoti's number for appointment. Now we are open for question answers. So question answers, you can start unmuting one by one. So and raise your hands in the online, and Manish sir, both of us, we can then get started with taking the question answers. So let's take up question answers. Sure. So we start, sir. Then let's have Utkarsh Satale. You can go ahead with your question. Please unmute and ask your question. Hi, I'm Utkarsh's father. So yes, sir. Basically, the question is when this batches typically start, and what is the fees of it? And the other question is whether these classes are or in person or online, and if it is in person, where those will be conducted. RK sir, aap lenge? Yes. Sir, these batches typically start in April, in the month of April, if board exams happen in the month of March. Okay. And these classes are purely offline, and these classes are available at the allotted centers of Universal Tutorials. Like Airoli, it is available, Vashi, it is available. Nerul Khargar. Khargar. So the faculty
are same at all these centers, or Yes, they are yes. Faculty is same at all these centers. Okay, okay. And since how many years this coaching classes are operating out of Vashi? Vashi, we are, I think it is our second year, and you would be taking admission to the third batch in Vashi. Okay. No, let me clarify. Universal Tutorials is operating for the 23rd year now. Champions Academy is operating for 14 years, more than 14 years. In Navi Mumbai at Kharghar, this would be the 5th batch. Yours would be the 5th batch. We started with Kharghar and Nerul. Vashi specifically would be the 3rd batch. So I've tried to put that in perspective. And what is usually a batch strength, sir? 40 students. That is fixed, or? It is fixed. It is upper limit. Okay. Okay. And what was the result last year, sir? If I asked about the NEET or IIT exam in typically Vashi Center. Vashi specific result, I do not remember, but definitely we have noted down your name and we'll sending the result on WhatsApp to you. Okay, sir? Manish, sir? No problem. Right. Thank you. Mr. Deepak? You can please unmute. Good afternoon, Abhinav sir and Mr. Rakesh sir. Abhinav sir, my query is, in your PPT, you mentioned integrated program with CBSE and state board. So if your curriculum is totally IIT based for engineering, then does it really matter CBSE or means CBSE or state board? How will the student be able to cope up then? Sir, both these syllabuses are largely the same syllabus, CBSE and state board. The 11th, 12th PCM syllabus is largely the same. It's in fact in 2009, in the Kapil Sibal, when he introduced AIEEE as a common entrance, he had brought in all of these syllabus at the same level. So what is the difference now which is there is in their questioning style of their individual board exam. But as you're rightly saying, हमारे delivery में, हमारे product की delivery में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. We deliver our IIT program to the same set of students, whether they come from CBSE or they come from ISC or they come from any other state board. Our delivery is the common delivery. We do it that way. Unka basic syllabus is the same. Sir, further extension to my query, because you would be mainly concentrating on the PCM part. What about the other subjects? No? Because if the student doesn't score in that, then basically the average tends to come down. So how will the student be able to address those subjects? So sir, you have to decide your focus, Mr. Deepak. कि आपका focus क्या है? If you are board focused, then और आपका aim क्या है? Because what happens is when you are looking at IIT, you are only having to have minimum 75% score at IIT. So बच्चे are largely focused on PCM. English में we prepare them. इसी की वजह से हम CBSE या स्टेट बोर्ड में उनको वो जो 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं वो दूसरे बहुत लाइट सब्जेक्ट्स करवाते हैं. It could be like an IT or a geography or a physical education. These light subjects we make them do. So उसमें उनको ज़्यादा focus नहीं करना पड़ता है, and we are really not looking at it. Plus, we at UT also offer them a test series which helps them to at the last immediately get good score in those. But focus on subjects पे नहीं है, and that is not a priority. Priority is IIT and NEET exams. That's a priority. अगर आपकी वो priority है, तो you should not choose this option. Then you should look at other options. No, sir, it's not the question of choosing the options. My thing is that. May I add something? May I add something, Anwar sir? Yes, sir. Sure, please, sir. Actually, this is a myth which is being propagated by many local tutors who do not teach for JEE and NEET. वो बोलते हैं कि नहीं, आपका बच्चा यहाँ गया तो खाली PCM पे कॉन्सेंट्रेट करेगा और बाकी सब बेकार रह जाएगा और बच्चा फेल हो जाएगा बोर्ड में भी. तो ये सारे जो चीज़ें हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ, हमारा बच्चा AIR 52 आया. That means he was focusing on JEE only, right? But he is also our board topper
in HSC board, that despite the child being from ICSE board till 10th standard. ये भी एक मिथ है, हमारा बच्चा ICSE में पढ़ता है, CBSE में पढ़ता है, HSC या SSC में जाएगा तो पता नहीं कैसा करेगा, डिफरेंट पैटर्न होता है. That child has topped not just our Champions Academy in boards, but that he has topped entire Mumbai. If you not include Navi Mumbai and Thane, entire Mumbai has got 97% marks in HSC board, and he is also our top ranker in JEE. तो ऐसा तो नहीं हमने उसको अलग से बिठा के बोर्ड का. Anubhav sir, I want to. I also attended one of your sessions earlier this year, where you quoted that one of your students who was not so he was good student, but overall his percentage was less, but he has scored good in PCM and he got admission to IIT. But later on, that student candidate failed to secure a seat in IIM only because his average was less. The average total in the board. So don't you think means the भले स्टूडेंट अगर 3 सब्जेक्ट्स में आगे है, बाकी उसका एवरेज अगर पीछे रह जाए, तो इट डजंट मेक सम सेंस, राइट? नहीं ऐसा नहीं है सर. ऐसे देखो, देयर आर एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स, बट इट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम वॉकिंग ऑन द रोड, राइट सर? एक्सेप्शंस रहेंगे, ऐसे एक आध दो एक्सेप्शंस हर साल आएंगे, बट हम लोग वो एक्सेप्शंस के बेसिस पे जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, राइट? ऐसा भी होगा कि कोई बच्चा इंग्लिश और इसमें बहुत ज्यादा अच्छा होगा और वो पीसीएम में अच्छा नहीं होगा, उसकी वजह से उसका पीसीएम में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ऐसा भी होगा. तो दोनों तरह के रहेंगे उसमें, राइट सर? मेरा ये सवाल है कि जब IIT एग्जाम इज टोटली बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न, देन व्हाई नॉन इंटीग्रेटेड बीइंग ऑफर्ड इन स्टेट बोर्ड? उसका कुछ लॉजिक नहीं बना, मतलब मेरे हिसाब से कुछ लॉजिक नहीं बनता है उसका. It will just add more stress on the student to prepare for that state board also and for this वही तो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर इज नो एडिशनल स्ट्रेस. आपको बोर्ड एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, पास करना पड़ेगा. यस सर, नो सर. तो सर आप बोलिए. I think we'll take another question, Mr. Deepak. There are people who are wanting to do more questions. Sure. Yeah. मैं individually आपसे बात करूंगा. So let me take some offline courses questions now. Yes sir. Any questions in the offline period? Yes. I mentioned that. So what if the child is still not sure what he or she wants to do? Yes. So that's a brilliant thing which you have asked. So what RK sir at Champions Academy always recommends is that initially. Can you repeat the question, because that's inaudible, and I mean that would help to put the context to the answer. Okay. Question was where both PCM, PCB करना चाहता है, बच्चा is not clear whether he'll be doing PCM or PCB. How do we decide that? So my answer to that question is, I would like that he should only do either PCM or PCB. That's the ideal thing. But how do you decide? So RK sir has a solution, and he's been doing it at Champions Academy. What sir does is, see, we would start our courses in the month of April. Result नहीं आएगा, May तक result आएगा. June, July तक आपके सब कुछ stabilize होगा या कुछ होगा. So at Champions, what sir advises is that आप April, May, June 3 महीना Maths and Biology दोनों attend. By that time आपको clarity आना शुरू हो जाएगी कि आपको किस दिशा में जाना है. Most of the students get clarity and they either drop maths or they drop biology and stick with one. But agar fir bhi nahi clarity aati hai, then you obviously continue with that. It's not a crime. It's not something which is undoable. वो दोनों कर सकते हैं. But that's how what RK sir recommends. That's my answer to that question. Yeah, shall I add one more information? Yes. Yeah. So suppose that clarity has not reached till July, then you have a choice of taking admission to state board in 11th standard and change the subject in 12th standard also, after experiencing the entire 11th standard course of both the subjects. तो 12वीं में जाके भी आप change कर सकते हो, लेकिन if you take admission to CBSE integrated course, then your subjects remain frozen for 12th also. Okay? तो ये चीज आप और एक और information अपने पास रख सकते हो. So one more question from offline.
and then we'll take. Yes. Sir, you previously mentioned that science field can be broadly divided into engineering, medical, and both. So what if I personally want to pursue pure sciences? Like it's part of that. It's part of that. Pure science is obviously part of that. Yes, sir. Like I want to forgo engineering and medical and just focus on one part. So then you're looking at IISC's Indian Institute of Sciences. उनका भी admission JEE Advanced के through ही होता है, JEE Mains के through ही होता है. So we have to go through this route only, through this route itself. Okay. So it is part of that route, engineering route, pure sciences. या NEET में you're looking at pure science admissions over there. So and if that includes biology pure sciences, so same route through engineering or through medical? No, biology के लिए you will find some CUET routes मिलेंगे आपको. अगर आपको specific NEET के अलावा कुछ institutes will offer through NEET and some institutes are offering through CUET. नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं सर. वो सर ने क्या बोला, PCMB अगर कंटिन्यू करके ड्रॉप करना है तो स्टेट बोर्ड में एडमिशन दो. अगर आपको क्लियर है कि आपको PCMB करना है, CBSE will allow you to do PCMB. वो अगेन आपकी मर्जी है, whether you want to do integrated or non-integrated. Integrated will be कि आप हमारे साथ associated होंगे, non-integrated होगा आप एक स्कूल प्लस एकेडमी, हम दोनों के साथ. Liberty to change the subject in front of. That's what sir has technically said. State board would allow you the flexibility of your changing over subject after 1 year also. CBSE may not allow that. That route is difficult in CBSE. It's difficult. It's difficult. हमने एक बच्ची की अभी चेंज करा है, बट वो थोड़ा सा स्ट्रेनस और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला रूट हो जाता है. अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करनी है तो PCM is required. PCM is required. माइक्रोबायोलॉजी में BSc करनी है तो PCB. हाँ, PCB. But if we keep PCMB, then we'll have some. Yes. हाँ. You have to realize कि फिर आप कोर इंजीनियरिंग या कोर मेडिकल की तरफ नहीं जा रहे. थोड़ा सा आपके कॉम्पिटिटिवनेस आपकी कम हो रही है, बिकॉज आपको एडिशनली सब्जेक्ट तैयार है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ क्राइम कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट आपकी कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी कम हो रही है. चलिए, we'll handle more questions now. The online से कोई question? Aniket Singh, please ask your question. Unmute and ask. Yeah, hi. Thanks for giving this overview, Anubhav sir and Apke sir. Just a couple of questions. I think by what time you are looking to have the decision made for the admission for this 2-year pattern for Champions course? That is one. And typically, a lump sum, what would be the fee structure looking like? So, sir, the time period would be about, I think this will all come to you in a letter. I'm looking at around a month or so. By the end of October, we make an offer and then you decide. It would be end of October types. Now, lump sum would be आपको letter में आएगा, वो सब आपको letter में मिलेगा. Or depending upon the scholarship which we are extending, I would not like to talk about that amount right now in this forum. It would be coming into you in a separate letter to you. That would come to you. और वो 2 साल का पूरा package आएगा. And maybe one question to RK sir, just the last one. From the integrated options, right, that you mentioned, app-based versus instructor-led. I think I remember you said it is purely instructor-led, and we would also have our app from Champions to take care of the questions, examinations, or whatever tests have been happening. I mean, app-based learning is also what you are promoting, or it will be purely 100% instructor-led? See, this is purely 100% offline, and this online thing is only the support. Yeah, thank you. Madam Saroj Ajinkya, please ask your question. Good afternoon, sir. I had a couple of questions. We reside in Thane. So, I mean, you have a Champions Academy at Thane. So, it's somewhere related to
Yes, we have Champions Academy at Thana Station also. Okay, so we can, I mean, even if we get a letter from UT, we can join. Yes, with that letter you can join the Thane Center also. Okay, and I mean, now the more focus, as I mean, I came to know, was for JEE and all. I mean, do you also hold hand, the students for CET or BITS exams or other competitive exams? Yes. So you would be surprised to know we would be sending you the result also, that the children who have got JEE rankings, the same children have got CET rankings also. Same 99.999999, and we have more than 50 students who have got 99 plus percentile in CET. Okay. So one more question for Manish sir. Will I get a recording for this session, because my husband couldn't attend the session due to some emergency? Yes, madam. So the recording would be available on our Facebook page, UT's Facebook page. We are getting it recorded. And otherwise, you can speak to your branch coordinator. We'll also send you the link. Okay. Thank you, sir. Thank you. One more question, last question. You said that the scholarship is, scholarship test is not for these 50 students, right? Correct. So you'll directly receive a letter. Yes. Based on your performance based on the child's performance in regular UT course. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. Mr. Saha, you may ask your question. This is something I want to ask Anubhav, sir. Sir, actually, JEE we are basically. I want to ask about MSCET. Do we provide like specific support or tuitions for MSCET student, whether if they are going to a non-integrated? No, sir. This will be a combined course which the UT Champions offers, where how it happens is, initially they are teaching the students at one level only. सब बच्चों को 11th में एक साथ पढ़ा रहे हैं, but धीरे धीरे eventually down the line, after about 8-10 months के बाद, they realize that a particular set of children are only able to perform at the level of JEE Advanced, and some are only able to perform at JEE Mains, and some are able to perform at MST CET level. So what they do is they bifurcate those students करीब 10 महीने 12 महीने बाद, and they put them into these special classes. So आपको शुरू में all of them will be taught together. Then you will be put into MHT CET special batches, where you are saying that you are not focusing at JEE Mains level or JEE Advanced level, and your focus is only MHT CET level. Then you will be put into those batches, and you can exclusively attend those batches there. So शुरू में we would not differentiate, but later on we'll differentiate. Okay. And next question is, जो state board integrated आपका है, वो किस स्कूल के साथ टाई अप होता है, और it is something directly UT has a license to do that schooling? Yes, it's our own junior college, Champions Junior College at UT Kharghar. हमारे ही premises पे हैं. We are ourselves delivering that junior college. Okay, so it is as good as कि कोई भी हम जैसे फादर एग्नल में जा रहे हैं या आपके यहाँ आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, HSC का जो सर्टिफिकेट है वगैरह सब कुछ वैसे ही मिलेगा जैसा स्टेट? Yes. Okay. और एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड जो अपने सिलेबस है, लाइक बिकॉज स्टूडेंट हैज टू जगल विद टू थिंग्स, 11-12 का स्टडीज भी रहता है और ये इंटीग्रेटेड, सो जो भी JEE या MSCET के लिए आप कराते हैं, so both have same syllabus, or are we saying कि 11-12 has something different and for JEE you are adding something else? So what it has to like, कैसा syllabus का content क्या है? Syllabus is exactly the same, sir. सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है. मतलब जो 11-12 में 11-12 में जो स्टडी कर रहे हैं उसी को आप भी एज ए इंटीग्रेटेड जो आपके ट्यूशंस है या जो चैंपियंस एकेडमी करा रही है, they are making it more competitiveness readiness, right? Yes. So and one question, if my focus is MSCET more, because मुंबई में ज्यादातर कॉलेज में MSCET से एडमिशन मिलता है, तो पहले तो आप ये बताएं कि ये क्या ये सही मेरी एनालिसिस है या गलत है? आरके सर, मतलब आप बोल रहे हैं खाली CET पे फोकस करना है, राइट? और मेरा ये मतलब ये स्टेज तक पहुंचने का रीजन क्या है सर, कि मैंने मुंबई की काफी कॉलेज में देखा कि जहाँ पे एडमिशन इंजीनियरिंग के हो रहे हैं,
तो उनमें वो लोग MSCET के रिजल्ट पे एडमिशन देते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये सच बात है? नहीं, सही बात है। IIT JEE एडवांस के स्कोर पे एडमिशन देता है। बाकी किसी भी स्कूल में, बाकी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में JEE एडवांस का स्कोर नहीं लगता है। ICT जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, दे टेक JEE मेन स्कोर ऑल्सो एंड CET स्कोर ऑल्सो. All other remaining engineering colleges take CET scores in Mumbai. और इसमें अगर समझिए कि सर मैंने MSCET किया तो उसमें वो लोग जो कॉलेज का एडमिशन देते हैं, क्या वो ऐसा होता है कि सबके रिजल्ट आने के बाद एडमिशन देना चालू करते हैं, या समझ लीजिए JEE का पहले रिजल्ट आ गया तो उनको एडमिशन दे दिया, फिर सीट नहीं, सबकी कॉमन काउंसलिंग सीट्स अलॉटमेंट होता है, एक साथ ही होता है सारे रिजल्ट आने के बाद। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि मैंने JEE दिया तो मेरा MSCET का जो कोटा था उसमें कुछ चला गया, इसमें चला गया, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है सर, बेसिकली अगर हम इंटीग्रेटेड स्कूल करते हैं स्टेट बोर्ड के साथ, तो कितने घंटे अपने यहाँ स्टडी करना पड़ता है UT के इंटीग्रेटेड में? 15 आवर्स पर वीक कोचिंग होती है, दैट इज 5 आवर्स पर सब्जेक्ट। 5 घंटे फिजिक्स, 5 घंटे केमिस्ट्री, 5 घंटे मैथ नहीं है तो 5 घंटे बायो। मतलब वीक में हम सारे दिन बुलाते हैं या कुछ दिन बुलाते हैं? हाँ, बताता हूँ ना आपको। तो PCM, ये 3 सब्जेक्ट का जो कोचिंग है, बेसिकली इट इज फॉर 15 आवर्स। तो 5 आवर्स बुलाया तो 3 days इन अ वीक हो गया, राइट? सो 3 days इन अ वीक इज डेडिकेटेड कोचिंग। उसके बाद एक दिन कोचिंग का टेस्ट होता है, 4 days। 2 days आर रिजर्व फॉर द स्कूल, फॉर द जूनियर कॉलेज। रिजर्व का मतलब जब जूनियर कॉलेज का एडमिशन होगा, जूनियर कॉलेज का सेशन चालू होगा, उस टाइम पे आपका प्रैक्टिकल्स चालू होंगे, उस टाइम पे आपकी इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट है उनके लेक्चर्स चालू होंगे। अच्छा, मतलब PCM के लिए फिक्स आवर्स है, बाकी सब सब्जेक्ट जो है वो स्कूल के आवर्स जो आपने डिसाइड किया वो 2 दिन के अंदर बाकी के सब्जेक्ट बाकी चीज कवर होंगी। जैसे अप्रैल में आपका बैच चालू हुआ तो कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि हमारा तो जूनियर कॉलेज अप्रैल में चालू हो गया, लेकिन अप्रैल में जूनियर कॉलेज का एडमिशन ही नहीं हुआ होता है, CBSE का रिजल्ट ही नहीं आता है, तब तक हम बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करते। तो अप्रैल से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब तक तुम्हारा जूनियर कॉलेज का एडमिशन फाइनलाइज नहीं होता तब तक बाकी सब्जेक्ट इन प्रैक्टिकल, यानी यू आर नॉट ऑफिशियली लीगली अ स्टूडेंट ऑफ जूनियर कॉलेज, राइट? एक लास्ट क्वेश्चन सर, we'll appreciate, बस अब आप इसको लास्ट रखें so that everybody gets an opportunity, sir. I agree. And just last question सर, कि अगर मेरा फोकस MSCET है तो मुझे CBSE बोर्ड में जाना चाहिए या स्टेट बोर्ड में जाना चाहिए? 2 साल पहले CET का एग्जाम कैंसिल हो गया था। बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ CET पे फोकस रख रहे थे उनको JEE मेन देना पड़ा और JEE मेन में वो मिजरेबली फेल हो गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपका जो CET कंडक्ट कराना है स्टेट को, इट शुड बी ऑन द लाइंस ऑफ JEE मेन्स। उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया हुआ है कि वी वुड बी कंडक्टिंग CET ऑन द लाइंस एंड सिलेबस ऑफ JEE मेन। उसमें भी वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चीटिंग करके इजी एग्जाम दे देते हैं, वो बात अलग है, बट दे आर सपोज टू मेक इट अप टू द लेवल ऑफ JEE मेंस। तो दो रिस्क है उसमें, कैंसिल हो गया तो एग्जाम क्या करेंगे आप, दूसरा रिस्क है अगर उन्होंने JEE मेन के लेवल का कर दिया तो क्या करेंगे, उन्होंने तो रिटर्न में कमिटमेंट दिया है ना। राइट। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से कि मुझे CBSE जाना चाहिए या ICSE जाना चाहिए? अरे कोई भी, इट इज बोर्ड इमटेरियल, इट इज बोर्ड इंडिपेंडेंट। आप कोई भी बोर्ड में जाओ, आप दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। Okay, ji. Thank you very much. Oral, as I see the screen name. Yes, sir. Yeah. Yes, ma'am. Please. Are you able to hear me? Yes. Sir, please just wait 1 minute. I'll take an offline question now. Yes. नहीं, महाराष्ट्र में पहले होता था अपने टाइम पे 5%। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए अनुभव सर। हाँ, sorry. So the question is that if the child is from CBSE or from ICSE or from state board, does he or she get any preference after standard 12 in any of the Bombay colleges? So the answer is no. It is now at par. जो आपका एग्रीगेट है उसी हिसाब से। अब there is one more change. Now कोई भी कॉलेज में 12th के बेसिस पे एडमिशंस ऑलमोस्ट खत्म हो गए। इट्स कहीं ना कहीं कोई एंट्रेंस एग्जाम है उसी के बेसिस पे, सो इट्स नो लॉन्गर रेलेवेंट। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस?
Top three are still, if from my memory, it's still Ruparel, Ruia. These the colleges is what I would remember, but I'm not really very updated. These are just a question. We have a college over here, separate notes for state integrated course class. 2 days a week to Kharghar branch for that. You have to come all the days to Kharghar branch. 3 days आप PCM के लिए यहाँ आएंगे. We are having Nerul branch, right? Okay, RK sir. Yes, sir. RK sir, if they take integrated with our Nerul branch, so they will be coming 3 days to Nerul branch for our coaching for PCM. His question is, I'll tell you. So all the days they would be coming to our Nerul branch only for 12 days per year. They would be coming to our Kharghar branch for practicals. All theory subjects would be done at Nerul branch only. Even though your college is at Kharghar, but right. theory subjects you will be studying at Nerul. Only for practicals, 12 days per year. They would be coming to our Kharghar branch. Qualifying the percentage for all these certain qualified percentage. 50%. 50%. That is because we are concentrating in some 50%. Overall concept. Sir, more questions from the online now. Total, please go ahead. Yeah, actually, in earlier question, Abhinav sir just answered regarding my question regarding CBSE or state board percentage, and you said it is immaterial nowadays, right, sir? Just yes. But I think when merit list displays and at the same rank there are a lot of students on the same rank, that time this percentage may help to up and down. No, sir. First they see, suppose you are going for PCM ranking, then first they see mathematics marks, then they see physics marks, then they see chemistry marks, then they see age. Okay. The older students get better rank. Okay. Okay. सारी क्राइटेरिया से वो डिसाइड कर लेते हैं. इनफैक्ट इस पे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बहस भी हुई है, और कि why how can you consider age only to be the fourth criteria to decide on the same score, same rank position. तो वो उन्होंने अभी तक सेम ही रखा है. Okay, and one more question is regarding and in earlier question this was discussed also. JEE entrance and CET entrance is at almost at the same level. It should happen, right, as per Supreme Court guideline. But is there a syllabus difference or pattern difference in this one, or do we need to adapt for CET something different, different course in? Yeah, I tell you. So sitting here today, if I ask you, do you know the JEE Mains ka pattern? Answer is no. If you ask me also, I don't know the JEE Mains ka pattern after 2 years. Okay, because every year there are some slight changes in the pattern. Okay, the same slight changes are there in the JEE and CET pattern also. In CET pattern, they ask 200 questions, multiple choice questions, one choice correct. In JEE pattern, they ask 90 questions, 30 questions each PCM. Okay, and last year they changed it to only 75 questions. 90 questions change करके 75 कर दिया. बच्चों को 2 साल पहले नहीं पता था जब प्रिपरेशन चालू की थी. तो ये छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं पैटर्न वाइज, अदरवाइज मेजर जो चेंज है नीट CBS इसमें CET और JEE में, the major difference is CET has declared that they will ask only 20% syllabus from 11th standard, 20% weightage of the 11th standard syllabus, and 80% weightage for the 12th standard syllabus. While JEE does not announce this, they indirectly give more questions from the 12th syllabus, that is 65 to 70% questions. Remaining 35% questions are from 11th syllabus. तो वो अनडिक्लेयर्ड रूल है, इनका डिक्लेयर्ड रूल है. दूसरा जो मेजर डिफरेंस है कि 50% मैथमेटिक्स आता है CET में, जो JEE में नहीं आता. JEE में 1/3 मैथमेटिक्स आता है.
Okay. तो दोनों का थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अलग है, बाकी कुछ नहीं. हमारे वही बच्चे जेई मेंस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो सीईटी में ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं. आप यू कैन कंपेयर द रिजल्ट, दोनों आजू बाजू रख के देख सकते हो. ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे स्पेसिफिकली जेई में कर रहे हैं अच्छा और उनसे कोई अलग बच्चे हैं जो सीईटी में एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. Okay, I'm asking for this question is whether we need to have a separate coaching for JEE and no, sir, you don't need that. Yep. Thank you. Mr. Arindam, we can go next. Please ask your question. So we'll take last 3 participants. Please ask. Hi. So my son is studying in class 10th UT Koperkeren. So what I understand from the session is if we have to enroll ourselves in the 11th, the Champions Academy and UT collaboration, I need to necessarily enroll myself to Vashi or Airoli or Nerul or Kharghar. These are the 4 centers which are available, right? Koperkeren is available. Right, right. As of now, we are running our courses from 5 branches. So Koperkeren is presently not one of them. Yes, okay. Currently we don't have a batch. So the next question is, if I have to enroll for state board, because I understand state board is having the flexibility of giving MHCET also and all the other JEE advanced and all these things. So if I do that, then my son has to go to Kharghar branch or Vashi branch also he can? Vashi branch only, sir. Vashi branch only. Okay. Only 12 days per year he has to go to Kharghar branch. 12 days per year. Fine. So the third question is whether, so as you said, the first 50 students will have some discount or something. Scholarship, yes. So scholarship would be depending on any percentage or. How are you performing at UT test? Scholarship would depend on that. Your overall performance in UT test. Okay, so whatever percentage he got, so on that basis. Yes. Yes. So you don't have to write champion scholarship test. Basis how you are doing in UT chapter-wise test that you've been writing, your scholarship would be offered. Specifically on the physics, chemistry, mathematics subject or on all subjects? All subjects that you have taken with us, cumulatively we'll look into that and you will be offered a scholarship. Okay, I thought it is on the PCMB performance. Okay. Thank you. Mr. Arnav, you can ask your question. Thank you for arranging the webinar. It was very insightful. My question is related to reference which was made by Anubhav sir. He was referring to IPM program. So I would like to know what is the eligibility, means which subject we should go for to go for this kind of IPM is a program. I'll tell you, sir. IPM is a program. Full form is Integrated Program in Management. This is a 5-year degree course from IIMs, and this is stream independent. Okay. A commerce student, an arts or a science student, anybody can take this. Exam ka nature kya hai? It's an aptitude exam where you will be asked on maths aptitude and language, English language aptitude. Maths and English? Yes. Okay. You answered my question. Thank you very much. Thank you, Mr. Arnav. So we'll take last question. Aman Tamboli, please go ahead and ask your question. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. So thank you for the session. It was very informative and helpful. Sir, I'm staying in Panvel. We are giving your test series from Panvel. So I wanted to know, is there any course available for class 11th and 12th in Panvel? So we are running, madam, IIT NEET batches from Panvel. पनवेल में भी हमारे ये UT Champions के courses offered हो रहे हैं, वहां से run कर रहे हैं इसको. Okay, means he will not have to travel Kharghar for your classes. He can take admission in Panvel branch, right, sir? Yes, absolutely right. Okay, sir. Or sir, if my child wants to go for NEET, means he is interested in biology. At my time, sir, we were studying in Latur pattern and all. At that time, we were thinking taking maths will help for physics. But now we have also studied 25 years back. So, sir, is it true that if we take maths along with biology, it helps for physics, or is it helpful, or we should not go for that? Okay, sir. Yeah, it is very helpful, ma'am. You are asking mathematics is helpful for this kind of preparation or not, right?
Actually, sir, my question is like my son wants to go for NEET, but as you know, for medicine, its competition is very high. There are chances even good children are scoring, and it is difficult. So if we don't keep maths, then we don't have any option, na? Right? Yes, yes. Then you can keep commerce also. You'll have even more options. तो उनका कहना है उनको नीट करना है तो हाँ, मैं मैथ्स आपको बताता हूँ. तो मैथ्स जो है ना, मैथ्स हेल्प करता है मैम उसमें. लेकिन व्हाट वी डू एट यूटी चैंपियंस इज हमारे बच्चों को हम पीसीबी ही दिलाते हैं और मैथ्स के क्लास उनको पहले 6 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट वी गिव देम सो दैट दे आर हेल्प्ड इन फिजिक्स स्कोर्स आल्सो. अच्छा. हाँ, लेकिन फोकस उनका पीसीबी पे ही रहता है. Okay. If the child wants to go for NEET, he should try. He should not take maths according to your strategy, right? As a subject burden, he should not take because वो subject बढ़ जाता है तो उस बच्चे का 4 सब्जेक्ट पे फोकस होता है तो जो नीट पे फोकस होता है वो भी और भी कम हो जाता है, फिर आने के चांसेस और भी कम होते हैं. अच्छा. So it's better to go for PCB only, right? Correct. Yes. And sir, what about abroad studies? You were telling we were preparing for abroad. So I know I'm taking a lot of time. It's last session. No worries. So what we will do is for this, madam, let us connect separately. You can talk to your branch coordinator and take a one-on-one appointment, and we'll help you with the abroad study options after 12. We'll do that counseling. Okay, sir. Okay. Thank you very much, sir. Thanks. Sir. Thank you. Have a good day. Sir, one more question for offline one. Yes, please go ahead. Yeah. We'll take one last question offline. पूछिए. क्वेश्चन इज अगर कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो नीट अपेयर कर रहा है बट वो क्रैक नहीं कर पा रहा है, सो व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन? Okay, so a lot of other options are also available. In PCB, child can go for not just MBBS but BHMS also, Bachelor in Homeopathy, Bachelor in Ayurveda, Bachelor in Dentistry, Dentist भी बन सकता है. और उसके बाद Pure Science options are available. Child can go for regular BSc, MSc in Physics, Chemistry, Mathematics or Biology. D Pharma, yes. Same question for PCM? Same stands for PCM as well. What are the options? I'm sorry. So there are available colleges like in mathematics you have CMI, Chennai Mathematical Institute. They give you BSc degree in mathematics, but they are the most sought after course in India. उनके placements IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से भी अच्छे हैं इस साल के. तो लाइक CMI में एडमिशन मिलना चाहिए. मैथमेटिक्स का BSc कोर्स है वो. You have IISc Bangalore, you have multiple IISCs, you have triple IITs as well, जहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिलती है. IISCRs हैं, IISCR Pune, IISCR Bhopal, IISCR at different places. There are